Hi. Hello, guys. Good evening. I hope everyone is able to listen me carefully. I hope my voice is audible for everyone. So I'm about to start today's session, my dear friend. Today's session is a common session. Let's a little bit recap whatever we had finished in the last lecture. On last Saturday and Sunday, I had started about WH questions. Basically, I started the topical question. So after that, I thought about what do you mean by question, how to create a question, then what is the role of question in English speaking, WH questions क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, उसके फॉर्मूलेज क्या है एज पर टेंस, उसका यूज क्या होता है कम्युनिकेशन में, अगर हम यूज नहीं करेंगे तो हमारा क्या लॉस होगा, यूज करेंगे तो हमारा क्या बेनिफिट होगा. That all things I had taught on last Saturday and Sunday. I hope everyone must have gone to my all the lectures so far. मैं आशा करता हूँ कि सब लोग मेरे लेक्चर देख चुके होंगे. जो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख रहे होंगे, देखेंगे. So today's session is very important, guys, because I'm planning to conduct one common session today. I hope everyone will understand the session or the interaction which I'm going to teach. आजचा जो टॉपिक असेल तो कॉमन सेशन असेल. आज का सेशन एक कॉमन सेशन है जो अपने डेली लाइफ में और रेगुलर लाइफ में उसका यूज अपन करते हैं. ओके, सो टुडे सेशन इज सुपर डुपर इम्पॉर्टन्स. आजचा सेशन खूप महत्वपूर्ण आहे बिकॉज आपल्या डेली रुटीन मध्ये, डेली लाईफ मध्ये, in our college, in our office, at the time of interview, जो अपन करते हैं, जे अपन करतो, so that all things are taken care in that today's session. त्या सेशन मध्ये त्या गोष्टी काही कवर केल्या जातील. वो सेशन में वो चीजें कवर अप किए जाएंगे. जब दो नए लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जब दो नए लोग एक दूसरे से इंटरॅक्शन करते हैं, जेव्हा दोन नवीन व्यक्ती एकमेकाशी इंटरॅक्शन करतात, सो हाउ टू डू दॅट, ते कशा प्रकारे केलं पाहिजे, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन बिटवीन टू न्यू पीपल, राइट. So whenever we go for interview, whenever we join any new college or new school or new office, we start doing an interaction with each other. Okay, most of the students do not know how to do an interaction, how to do an introduction between two new people. They do not know what kind of dialogues or what kind of sentence formations we have to use, we have to create while while talking with each other. Okay, ज्यादातर बच्चे लोग को, ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग को नहीं पता रहता है जब हम किसी के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो हमें किस तरीके से करना है और कोण कोणते स्टेप्स फॉलो करणे हैं. जास्तीत जास्त स्टुडंट्स लोकांना माहीत नसतं प्रोफेशनली आपण कशा प्रकारे इंट्रोडक्शन केलं पाहिजे, कशा प्रकारे आपण डायलॉग स्टार्ट केले पाहिजे, हे त्या लोकांना माहीत नसतं. सो त्याचा तुम्हाला खूप उपयोग होईल. That will really help you guys in your day in day out life. For example, when we are traveling in the train, when we are traveling to our college, when we travel to our village or office, okay, or when we join any new company, or when we take an admission in new college or school, okay, we do interact with the people, we do interact with the new students. So how to do that and what kind of dialogues are there which we can use, that I'm going to teach today. वो सेशन में आज पढ़ाने वाला हूँ, तो सेशन में आज शिकवणार आहे.
Just to confirm, guys, is my voice clear for everyone? Because I haven't carried out the mic today. मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? माझा आवाज येतोय सर? I hope it असेल, because आज माझ्याकडे माइक नाही आहे. आज मेरे पास माइक नहीं है, so I am connecting directly through my laptop and my laptop media player. I hope my voice is audible for everyone. Okay, great. Is clear? Okay, fine. Amanda, your full name, please. Your full name. May I know what's your full name? May I know both of your full name, guys? Could you tell me your name, please? Someone is replying me, yes, sir. I just wanted to know the name. Yeah, hi Pradeep. How are you? Good. And the second person? I wanted to know the name of second person. No problem. That's okay. Today's session is most important, guys. आजचा सेशन खूप महत्वपूर्ण आहे. आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है. Please be focused. Listen it carefully. I have written some dialogues and some dialogue I'm going to type lively. मैं कुछ डायलॉग ऑलरेडी लिख चुका हूं. मैं काही डायलॉग्स ऑलरेडी लिहिलेले आहेत और कुछ डायलॉग मैं सामने यहाँ पे लिख दूंगा आपके सामने. ओके, ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज वेयर आई प्रेजेंट माय स्क्रीन. मैं मेरी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे प्रेजेंट करने वाला हूँ. मी माझी स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर प्रेजेंट करेन. ओके, सो that's great. That's great. That's okay. That's fine. Just wanted to know your name. That is okay. All right, Anand. No problem. आनंद, जस्ट गो थ्रू माई ऑल द लेक्चर्स. मेरे जितने भी लेक्चर्स है आप मेरे लेक्चर्स देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे आनंद. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू नंबर 15. आई होप यू विल ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड. आप पूरी कोशिश करो उसको समझने की. मैंने ऑल थ्री लैंग्वेजेस आई हैव एक्सप्लेन. मैंने तीनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन किया है आनंद. मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इजीली. दैट इज माय मेन टारगेट एंड मेन पर्पस. गाइज, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टंट है. आजचा सेशन खूप महत्वपूर्ण आहे. ओके, बिकॉज सी डे इन डे आउट लाइफ में हम लोग ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां पे हम लोग को एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है या इंट्रोडक्शन करना पड़ता है. जिथे आपल्याला एकमेकाशी इंटरॅक्शन करावं लागतं, कॉन्वर्सेशन करावं लागतं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कैसा इंट्रोडक्शन करते हैं गाइस? कोई प्रोफेशनल तरीका फॉलो नहीं करते. आपण कोणता प्रोफेशनल पद्धत फॉलो करत नाही. वी जस्ट डू इट इन शॉर्ट. हम लोग उसको शॉर्ट में करते हैं. हाय, हेलो, तेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, मे बी कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं. And we start talking in regional language, maybe probably in Marathi or Hindi, and we start doing an interaction with each other. However, there is one standard way which I have created while doing an interaction between two new people. दो लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, वो दो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दो फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो मैच्योर्ड लोग हो सकते हैं. It can be possible at the time of job. It can be possible in the company. It can be possible in school and college. So there is a standard way, which is called as introduction between person one, person two. Okay, or conversation between person one and person two. I'll just share my screen, guys. You will come to know some dialogues which I have typed. मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. तुम्हाला थोड़े डायलॉग्स दिस दीजिए. मी टाइप केलेले आहे. आपको कुछ डायलॉग दिखेंगे. यू विल बी एबल टू सी few dialogues which I have typed on Microsoft Word page. I hope you will be able to see my screen, guys. Okay, I'm just going to present my screen. Are you able to see, guys? Is my screen visible for everyone? So these dialogues are some initial dialogues. I didn't get time today to type the dialogues and all because my whole schedule was completely busy today. मेरा आज का schedule बहुत ही busy था. माझा आजचा schedule खूप busy होता. So great, Anand. Thank you for your response, Anand. Thank you for your response, Pradeep.
So I didn't get properly time to type my own dialogues today. I have typed all those dialogues before 10 to 15 minutes to begin my lecture. एक 10-15 मिनट पहले मैंने डायलॉग्स टाइप किए हैं. सो जस्ट फोकस ऑन टाइटल. टाइटल पे ध्यान दो, टॉपिक के मीनिंग के ऊपर ध्यान दो. टाइटल वरती लक्ष द्या, टॉपिकच्या मीनिंग वरती लक्ष द्या. Conversation or introduction between two new people. Okay, so guys, स्टैंडर्ड वेज, जैसे मैंने लास्ट टाइम मेरे एक लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में मैंने पर्सनल इंटरव्यू पढ़ाया था, इफ यू गाइस रिमेंबर वेरी वेल, विच इज द फर्स्ट राउंड ऑफ एन इंटरव्यू. जो इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड होता है, जो इंटरव्यू का पहला राउंड होता है. इन लेक्चर नंबर 9 आई हैड थॉट अबाउट पर्सनल इंटरव्यू. लेक्चर नंबर 9 में मैंने पर्सनल इंटरव्यू पढ़ाया था. लेक्चर नंबर 9 मध्ये मी तुम्हाला पर्सनल इंटरव्यू शिकवलेला. ओके, I had taught about 9 steps while giving the personal interview in the company. उसको अपन myself बोल सकते हैं, या पर्सनल इंटरव्यू बोल सकते हैं, या जैसे HR अपने को क्वेश्चन पूछते हैं, काइंडली गो थ्रू योर प्रोफाइल और काइंडली गो थ्रू योर CV. ओके, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल इंटरव्यू. ओके, सो हियर द टॉपिक विच आई एम टीचिंग टुडे, यहाँ पे जो मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ conversation or introduction between two new people. For example, I'm the one person. Let's take an example of Anand, who's attending my lecture, or Pradeep, who's attending my lecture right now. Suppose मैं प्रदीप और आनंद का एक एग्जांपल लेता हूँ. मुझे आनंद से पहचान करके लेना है, या मुझे प्रदीप से पहचान करके लेना है. जर मला आनंदशी ओळख करून घ्यायची असेल किंवा प्रदीपशी ओळख करून घ्यायची असेल, I cannot say, hey, hi Anand, what's up? No. So the standard way says that, एक standard तरीका जो मेरा है वो क्या बोलता है, माझी जी स्टँडर्ड पद्धत आहे ती, लुक ॲट माय स्क्रीन, आय हॅव प्रेझेंटेड दोज डायलॉग्स. मी ते डायलॉग्स प्रेझेंट केलेले आहेत. पर्सन नंबर 1 अगर मैं हूं, जर मी पर्सन नंबर 1 असेल, ओके, सो हाउ वुड आई स्टार्ट, हाउ वुड आई बिगिन द सेशन? ओके, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बेस्ड ऑन टाइम, टाइम के हिसाब से. हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज विजय, or my name is Vijay, or I am Vijay, right? May I know your name, please? Or I can directly say, may I know your name, please? Hello, good morning. May I know your name, please? For example, person 2, maybe an Anand or Pradeep. Hello, I am. या तो ये सेंटेंस यूज करो, और this is Pradeep, or this is Anand. How are you? Right? So in this, guys, in this dialogue, I just want to type something. So if you look at my first dialogue, my dear friend, you will easily understand what I wanted to say. अगर आप मेरा पहला वाला डायलॉग देखोगे, जर तुम्ही माझा पहिला डायलॉग बघाल, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आई एम विजय, or my name is Vijay, may I know your name, please? Then person 2 will say, hello, I am Pradeep, I am Anand, how are you? So how are you is a question which will be, or which is asked by person 2. Now answer from person 1, that is from me. अगर मैं person 1 हूं, जर मी person 1 आहे, तर माझा आन्सर असेल, I am fine, may I know that how are you? मैं ठीक हूं, मी ठीक आहे, तू कसा आहेस, आप कैसे हो? राइट? आंसर फ्रॉम पर्सन 2. गाइस, सीक्वेंस इज रियली इंपॉर्टेंट. पर्सन 1, पर्सन 2 के डायलॉग्स का जो फ्लो है, वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सन 1, पर्सन 2 च्या डायलॉगचा जो मी फ्लो दिलेला आहे, तो खूप महत्वपूर्ण आहे. You have to remember the flow. My dialogues are very easy, guys. It can be easily understood by small kid. It can be easily understood by college student. It can be easily understood by school students, or it can be easily understood by any job professional. जो डायलॉग्स मैंने दिए, जो डायलॉग्स मैं देने वाला हूँ इसमें, वो डायलॉग्स बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, किसको भी समझ में आने चाहिए. बट फ्लो इज रियली इंपॉर्टेंट. फ्लो खूब महत्वपूर्ण है. फ्लो बहुत ही महत्वपूर्ण है. जिसको फ्लो याद रहेगा, फॉर हिम और हर, it's very easy to keep the dialogue in their mind.
जिसका फ्लो अगर रॉन्ग होगा, it will be very tough to remember that dialogue in their mind forever or for lifetime. I want this session, my each and every should remember forever, not for exam purpose, not for any interview purpose. This is a kind of topic which is used in daily conversation. एक ऐसा टॉपिक है जो अपने डेली लाइफ में यूज होने वाला है, डे इन डे आउट लाइफ में यूज होने वाला है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वर्सेशन और इंट्रोडक्शन बिटवीन टू न्यू पीपल. ओके, anyone can use it, guys, while joining the new college, while joining new school, while joining new office, maybe in the traveling. For example, if you want to travel to your village and in train you may interact with someone at that point or समय. Okay, so I hope आपको इनिशियल 2 डायलॉग समझ में आए रहेंगे. काउंटर्स होता है ना, काउंटर उस तरीके से होगा. सामने वाले ने जो सवाल पूछा आहे, समोरनं जो प्रश्न आलेला आहे आपल्याला, त्याच्यानुसार आपल्याला उत्तर देता है और उसी को अपने को सामने को वाले को वही सवाल पूछना है आणि समोरच्या वाल्याला आपल्याला तोच काउंटर क्वेश्चंस करायचा आहे. ओके, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टँडिंग. एनी क्वेश्चन गाइस सो फॉर? इनिशियल 2-3 डायलॉग्स, स्टार्टिंग के 2-3 डायलॉग्स में you guys can either reply on your thumbs or you guys can type your message, whatever. Now अभी नाम हो गया, तुम कैसे हो, मैं कैसे हूं, तू कैसा है, मी कैसा, ये हो गया. Now point comes to where do you live, आप कहां पे रहते हो, बराबर, मैं कहां पे रहता हूं. So next question from person 2, may I know that where do you live, क्या मैं जान सकता हूं आप कहां पे रहते हो, का मला कळेल का तुम्ही कुठे राहता किंवा तू कुठे राहतोस किंवा तू कुठे राहतेस, right? May I know that where do you live or where do you live, right? Then answer from person 1. त्यानंतर person 1 चं उत्तर असेल, उसके बाद person 1 का आंसर रहेगा I live in Thane at Dhokali, I live in Thane at GB Road, I live in Thane at Manorama Nagar, I live in Thane at Manpada, something like that. Right? So this is where you people have to counter each and every dialogues. इस तरीके से अपने को डायलॉग्स को काउंटर करना है या डायलॉग्स का आन्सर देना है. ह्या पद्धतीने तुम्हाला डायलॉगला काउंटर करायचा किंवा आन्सर द्यायचा आहे. ओके, सो दिस इज आंसर फ्रॉम पर्सन 1. नाउ जॉब ऑफ पर्सन 1 टू आस्क क्वेश्चन टू द पर्सन 2 एज वेल. अभी पर्सन 1 का भी जॉब रहेगा कि पर्सन 2 वाले को भी पूछना है, भाई तू कहां पे रहता है. पर्सन, अंडरस्टैंड गाइस? सो टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट. सामने वाला अगर अपने को रिस्पेक्ट दे रहा है तो अपने को भी उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए. अगर अपन सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे तो आपण एक्सपेक्ट करेंगे की सामने वाला भी आपला रिस्पेक्ट करना चाहिए. जर समोरच्या व्यक्तीला आपण आदर करतो तर त्याने पण आपला केला पाहिजे, और आपण समोरच्या व्यक्तीचा आदर करतो तर त्याला पण आपण तेवढा रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. तो अभी यहाँ पे ट्विस्ट देखो गाइस. द क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन 2, पर्सन 2 ने सवाल पूछा है, पर्सन 2 ने प्रश्न निकला है, पर्सन 1 ने आंसर दिया है, तो पर्सन 1 का भी फर्ज बनता है कि उसको पूछे. तो पर्सन 1 क्या पूछेगा, या तो कुड यू प्लीज लेट मी नो डालो या मे आई नो से स्टार्ट करोगे, दैट वुड बी मच बेटर. मे आई नो दैट वेयर डू यू live. Then answer from person 2. Answer from person 2, my dear friend. What would be the answer? क्या आंसर हो सकता है guys person 2 का? Can anyone type in the chat box? What a coincidence. Because are you guys able to see my screen guys? मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मैं जो टाइप कर रहा हूं. You guys can type here in the message guys. Whatever I'm typing, are you able to see? जो भी मैं टाइप कर रहा हूं आपको दिख रहा है? जे पण मी टाइप करतोय तुम्हाला दिसतंय? Are you able to see whatever I'm typing on the Microsoft Word page? क्या आपको दिख रहा है जो मैं Microsoft Word page पे टाइप कर रहा हूं?
दिसतं तुम्हाला? Perfect. So the next dialogue would be, oh, what a coincidence, because I also live in, maybe name of the place आप डाल सकते हो, right? But in different area, in bracket name of the, all right, full stop. Now the question would be from person 2. अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? पुढचा प्रश्न क्वेश्चन 2 कडून काय असू शकतो गाइस? What could be the next question from person 2? अभी कहाँ पे रहते हैं ये पूछ के हो गया. Where do you live? That is done. All right. Now the next question is, क्या मैं जान सकता हूँ अभी आप क्या कर रहे हो? का मला कळेल का तुम्ही काय करताय? That would be the next question. Okay. So are you working? Are you in the school? Are you in the office? Whatever. So next question from person 2. May I know that what are you doing now? पुढचा प्रश्न असेल, May I know that what do you do now? क्या मैं जान सकता हूं अभी आप क्या करते हो? का मला कळेल का आता तुम्ही काय करताय? Then answer from person 1. Correct. Person 1 चा आन्सर असेल next. So here guys, different answer. इथं वेगवेगळे आंसर्स असू शकतात. ह्याच्यामध्ये वेगवेगळं आन्सर असू शकतं. इसके अंदर अलग अलग आंसर्स हो सकता है. So here answer could be different from different person. This answer varies from person to person. ये आंसर पर्सन टू पर्सन से वैरी करेगा. हे आंसर पर्सन टू पर्सन वैरीज करना. ऑलराइट. देयर शुडंट बी वन कॉमन और वन मास आंसर. तिकडे कॉमन आंसर किंवा मास आंसर असू शकत नाही. So what would be an answer, or what we can expect the answer? So person 2 has asked a question to the person 1. Person 2 ने person 1 को सवाल पूछा है. Person 2 ने person 1 ला प्रश्न विचारलाय. May I know that what do you do now? क्या मैं जान सकता हूं अभी आप क्या करते हो? का मला कळेल का तुम्ही आता काय करताय? Then answer from person 1. It depends guys. It depends. So person 1 अगर कॉलेज में है, then person 1 will say I am appearing for TYBCom. If someone in the school, someone say I am in SSC. कोई 12वीं में है तो बोलेगा I am in HSC. कोई बोलेगा I am working in Sterling Shack. I am working in First Advantage as a project manager, as a technical lead. Okay. कोई बोलेगा I am housewife. कोई बोलेगा I am a teacher. You know, that kind of answer will come into picture. वो टाइप का आंसर वहां पे आएगा. त्या प्रकारचा आंसर येईल. So I am just mentioning here. मी इथं फक्त मेंशन करतोय. It depends. Now question from person 1. What is the question from person 1? Same question will be asked by person 1. Person 1 has same प्रश्न विचारना. Okay. May I know that what do you do now? Or may I know something about you? क्या मैं आपके बारे में जान सकता हूं? का मला तुझ्याबद्दल कळेल? Either it can be typed by may I know something about you, or may I know what do you do? All right. If you say something about you, that is also fine. If you say may I know what do you do, that is also fine. Both questions are having same meaning. दोघांचं meaning same आहे. Okay. So here, may I know that what do you do now? Answer from person 2. Again, it depends. So person 2 चा आंसर असेल it depends. Person 2 का आंसर रहेगा my dear team, it depends. Okay. Because person 2 को ही पता है वो क्या कर रहा है. So वहां पे कोई भी पर्सन हो सकता है, तिकडे कोणी असू शकतं. There shouldn't be one common answer for everyone. मैं it depends क्यों दे रहा हूं?
मी इट डिपेंड्स का देतोय बिकॉज एक कॉमन आन्सर नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. ते आन्सर पर्सन टू पर्सन वर डिपेंड असेल. वो आन्सर पर्सन टू पर्सन वॅरी होगा. Alright. Therefore, I am writing there it depends. If someone will ask me, sir, may I know that what I'm doing now? I will say I work in First Advantage. I work into global technology operation, that is IT. I handle my own English speaking and personality development classes in online session from last couple of months. Prior to that, I used to conduct my offline English speaking lectures. I had been conducting it for almost 15 years. Later on, due to some change in the schedule, I moved to the online platform. ये मेरा आंसर है. मेरे जगह पे और कोई रहेगा, माझा क्या दूसरा? It depends. Someone say, right now I'm appearing for engineering last year, and I am planning to go for Master of Engineering in the future, or I am planning to go for MBA, Master of Business Administrator. इस तरीके से आंसर डिपेंड रहेगा गाइस. ह्याप्रमाणे आन्सर सगळ्यांचा एकमेकांवर इस तरीके से आंसर अलग अलग हो सकता है. ओके. नाउ क्या करते हो, क्या करता है, काय करता. त्याच्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन असेल फॅमिली बॅकग्राउंड अँड हॉबीज. द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फैमिली बैकग्राउंड एंड हॉबीज. मैं हर एक क्वेश्चन को मे से क्यों शुरू कर रहा हूं. मैं कैन या कुड से भी शुरू कर सकता हूं. Why am I starting each and every question with may? Why not about can and could? I could have started it can and could as well. मैं उसको can या could से भी शुरू कर सकता था. मी त्याला can आणि could ने पण सुरू करू शकत होतो. Could is more polite than can. Yes, can could be a direct order. However, could is more polite than can. So could and can be used to ask questions or to make the general statement. कुड और कैन जो है वो सवाल पूछने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो मैं मॉडल ऑक्सिलरी में आपको पढ़ाऊंगा, और वो अपन जनरल स्टेटमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी एबिलिटी. बट में एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी है जो बेसिक में जो बहुत ही पोलाइट आहे. जब हम किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरॅक्शन करते हैं, जेव्हा आपण कोणाशी पहिल्यांदा बोलतो, जब हम किसी से डिटेल्स फर्स्ट टाइम लेते हैं, जेव्हा आपण पहिल्यांदा कोणापासून डिटेल घेतो, वो मे का यूज करेंगे ना, तो सामने वाले को एक रिस्पेक्ट होता है. जसं आपण आतमध्ये येतो, मे आई कम इन, वहां पे हम लोग कैन आई कम इन, कुड आई कम इन क्यों नहीं बोलते. तिकडे आपण कैन आई कम इन, कुड आई कम इन का नाही बोलत. वी ऑलवेज से मे आई कम इन बिकॉज वी आर टेकिंग द परमिशन. अपन समोरच्या व्यक्तीकडून परमिशन घेतोय. हम लोग सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं. ओके. अगर मुझे किसका नाम जानना है, क्या मैं तेरा नाम जान सकता हूँ. का मला तुझं नाव कळेल का. का मला कळेल का तू कुठे राहतोस. क्या मैं जान सकता हूँ आप कहाँ पे रहते हो. लाइकवाइज. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन is about family background and hobbies. अगर मुझे आनंद को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना है, या प्रदीप को मुझे पूछना है मेरे फॅमिली बॅकग्राउंड के बारे में, जर मला आनंदला त्याच्या फॅमिली बॅकग्राउंड मध्ये विचारता, आई कैन, हे आनंद मेरे फॅमिली बॅकग्राउंड के बारे में बता. हे प्रदीप तेरा फॅमिली बॅकग्राउंड के बारे में बता. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दैट इज वेरी रूड एंड कैजुअल वे. ओके. सो अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे कोई भी सामने वाला रहेगा चुटकी में आन्सर देगा. मी ह्या पद्धतीने जर विचारलं, मला कोणी उत्तर देईल. कशा पद्धतीने. May I know your family background and hobbies? क्या मैं आपके फॅमिली बॅकग्राउंड और हॉबीज के बारे में जान सकता हूं. का मला तुझ्या फॅमिली बॅकग्राउंड किंवा हॉबीज बद्दल कळेल का. इस तरीके से अगर सवाल पूछूंगा, एनीवन कैन आंसर. राइट. सो there should be a standard way, there should be a politeness while asking question to the front person. सामने वाले को सवाल पूछते टाइम पे, कोई डिटेल्स मांगते टाइम पे, उसमें एक पोलाइटनेस होना चाहिए, उसमें एक सॉफ्टनेस होना चाहिए, जो मे से दिखता है. मे आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड एंड हॉबीज प्लीज. ओके. सो आई जस्ट टाइप द क्वेश्चन हियर गाइस. मी ते प्रश्न टाइप करतो तुम्हाला पर्सन टूचा. May I know your family background and hobbies? This is a question from person 2. Now answer from person 1, my dear friend. Flow guys, remember the flow in your mind. Flow लक्षात ठेवा. फ्लो को अच्छे से याद रखो गाइस. किस तरीके से फ्लो जा रहा है, कशा प्रकारे फ्लो चाल रहा है, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काइंडली कीप द फ्लो इन योर माइंड.
Now, what would be an answer from the person one? The answer from person one, my dear friend, please be focused. Please be concentrate. Okay. The answer from person one से answer क्या हो सकता है? What answer can be possible from person one? The answer from person one, in my family, apart from my parents, I have one younger brother and younger sister. And my hobby, I like teaching. अगर मैं एक हॉबीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक हॉबीज बदल बोलते हैं, एंड माई हॉबी इज टीचिंग. अगर मैं मल्टीपल हॉबीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं मल्टीपल हॉबीज बदल बोलते हैं, माई हॉबीज आर टीचिंग, लिसनिंग, sharing my knowledge to the people and getting the knowledge from the people. This is what I can say. इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ. ह्या पद्धतीने मी बोलू शकतो. इफ आई एम अ पर्सन वन, जर मी पर्सन वन असेल तर, अगर मैं पर्सन वन हूं तो, because the question is asked by person 2, question person 2 ने पूछा है. Now my answer is, in my family, apart from my parents, I have a younger brother and a sister. In my family, apart from my parents, I have a younger brother and a sister. So far, is everything clear for everyone, guys? I hope whatever dialogues I have given on my screen, so far everything is clear. All right, try your best, kindly focus, look at the way I'm doing the pronunciation of word. मेरे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो. मी कशा प्रकारे शब्दांचे उच्चार करतोय त्यावरती लक्ष द्या. ऑलराइट, मैं किस तरीके से वर्ड का उच्चारण कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरा फ्लो है, कशा प्रकारे माझा फ्लो आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या. I just want you guys should focus fully on this. Then question from person one, may I know your family background and hobbies, please? Just I'll copy and paste, my dear friends. I said now, guys, I just want you guys should remember the flow in very way. Then answer from person two. Because the question is asked by the person one, so obviously person two answer देगा. Right? person two क्या बोलेगा? थोड़ा सा अलग तरीके से आपण यहाँ पे टाइप करेंगे. थोडं वेगळ्या पद्धतीने आपण इथे आन्सर टाइप करूया. पर्सन टू काय बोलणार सांगा गाइस. क्या बोलेगा? My HOBBIER, my hobbies are, जो भी है, and in my family apart from my parents, जो भी आंसर रहेगा गाइस, it depends. जे पण आन्सर असेल ते गाइस डिपेंड असेल. Whatever. Okay. So likewise, you guys have to go step by step. ह्या पद्धतीने तुम्हाला पर्सन वन पर्सन टूच्या डायलॉग्स मध्ये फ्लो आणि स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील. इस तरीके से आपको पर्सन वन पर्सन टू के डायलॉग्स के अंदर फ्लो को फॉलो करना जरूरी है. इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस. टॉप से टॉप स्टूडेंट्स डायलॉग का फ्लो भूल जाते हैं. उन्हें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है. हुशारातले हुशार लोक डायलॉगचा फ्लो विसरून जातात. मेरा वीक में स्केड्यूल रहता था जब मैं ऑफलाइन में कंडक्शन लेता था.
वीक में एक बार तो मैं लेता ही था प्रैक्टिस, मेरा प्रैक्टिस सेशन पे फुल फुल कॉन्सेंट्रेट था whenever I used to conduct the lecture and offline, जब भी मैं ऑफलाइन में सेशन लेता था. Okay, so here in online I can only advise for you guys because it's purely depends on your practice, it purely depends on your sincerity because it's a blind trust. Online platform is nothing but blind trust. Online platform मतलब एक blind trust होता है guys. आंख बंद करके टीचर स्टूडेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या स्टूडेंट्स टीचर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं. हु may not know who is doing study or who is not doing study. किसको पता कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है. But whenever the practical comes or whenever the real time session comes, for example interview, promotions, career growth, salaries and everything, at that time सबको पता चलता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है. Alright, who is lying to whom or who is telling lie to whom, because you cannot make fool to the interviewer. आप लोग इंटरव्यू को फूल नहीं कर सकते, तुम्हें इंटरव्यूला फूल करू शकर नहीं. Right, so henceforth it's an humble request for everyone: be sincere, be genuine, be trustworthy, keep doing more and more practice, give your best. Right, try your best because English is purely practical language along with theoretical session. Practical is most important. Only by having formulas, by having words, vocabulary will won't work. After that, practice session is must require. त्याच्यानंतर प्रॅक्टिस सेशनची खूप खूप गरज असते. प्रॅक्टिस सेशन असलाच पाहिजे. उसके बाद प्रॅक्टिस सेशन की बहुत ही जरूरत होती है गाइस, बिकॉज इट्स अ स्लीपी लैंग्वेज. इंग्लिश एक स्लीपी लैंग्वेज है. जितना हम लोग इंग्लिश के टच में रहेंगे उतना हम लोग परफेक्ट रहेंगे, या जितना हम लोग इंग्लिश से दूर रहेंगे उतना इंग्लिश अपने को इंग्लिश से दूर रखेगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट माय नेक्स्ट डायलॉग. मी पुढचा डायलॉग लिहितोय गाइस. पर्सन 2 चा प्रश्न आहे. मे आय नो फ्यूचर, क्या मैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग जान सकता हूँ? का मला तुझी फ्यूचर प्लानिंग कळेल का? मे आय नो युअर फ्यूचर प्लानिंग प्लीज. द आन्सर फ्रॉम पर्सन 1. My future planning is I would like to become successful person in my life. I would like to become a project manager or CEO of the company. I would like to start my own business. Okay, कोई बोलेगा I would like to become a social worker. कोई बोलेगा I would like to go through MPSC or UPSC exam. It depends. I would like to go through civil services exam, or I would like to go through, something like that. It depends. I would like to become a person who will be able to achieve their dreams, targets, goals, etc. So you have to follow your dialogues like me. तुम्हाला तुमचे डायलॉग्स ह्या पद्धतीने फॉलो करावे लागतील. आपके आपके डायलॉग्स को इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से उसको माइंड में रखना पड़ेगा. माय फ्यूचर प्लानिंग इज, जो भी आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Could you please let me know could you please let me know your future planning please. क्या आप कृपया करके मुझे आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता सकते हो? The answer from person 2, my dear friend. पर्सन 2 चा आंसर असेल. पर्सन 2 का आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड. वो भी बोलेगा माय फ्यूचर प्लानिंग इज. द आंसर फ्रॉम पर्सन 2. जो भी है. This is an answer from person 2.
Cool. Likewise, you guys have to follow your dialogues. या पद्धतीने तुम्हाला तुमचे डायलॉग्स फॉलो करावे लागतील. इस तरीके से आपको आपके डायलॉग्स को फॉलो करना पड़ेगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्यूचर प्लानिंग का क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद द नेक्स्ट डायलॉग फ्रॉम द पर्सन टू शुड बी कैन वी बिकम अ गुड फ्रेंड और मे वी बिकम अ गुड फ्रेंड. क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? का आपण चांगले फ्रेंड्स बनू शकतो का? It depends on the third person, guys. It depends on the opposite person. You cannot force someone to become a friend. आपण किसी को फोर्स नाही कर सकते अपना फ्रेंड बनने के लिए. आपण कोणाला आपला फ्रेंड बनण्यासाठी फोर्स करू शकत नाही. It purely depends on front person whether he or she would like to become your friends or not. वो सामने वाले पे डिपेंड है उसको आपका फ्रेंड बनना है या नहीं बनना है. It completely depends on the front person. We can't force someone to become our friend. आपण कोणालाही फोर्स करू शकत नाही आपला फ्रेंड बनण्यासाठी. बट जो स्मार्ट लोग रहते हैं, जो जेन्युइन प्रोफेशनल लोग होते हैं, यस ही बोलते हैं. ओके, जे स्मार्ट आणि जेन्युइन आणि प्रोफेशनल लोक असतात ते यस अच बोलतात. ओके, नोबडी से व्हाई आई डोंट वांट टू बिकम योर फ्रेंड. नहीं बनना है ना. Nobody selects that. Okay, everyone will say yes. Why not? So here the question from the person to can we or may we become a good friend? Answer for person. Oh sure, why not? Or oh sure. Only the person can say oh sure. Oh sure. It's an exclamation mark. Oh sure. क्यों नहीं? जरूर. कहा नहीं? नक्कीच. Oh sure. Now the next question would be, may I know your contact number, please? May I know your contact number, please? क्या मैं आपका कॉन्टॅक्ट नंबर जान सकता हूँ? का मला तुझा किंवा तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर कळेल का? May I know your contact number, please? Then answer from person 2. Person 2 का आंसर असेल. person 2 का आंसर रहेगा my dear friend. My contact number is, answer from person 2. A person 2 चा आंसर आहे guys. Okay. My contact number is, माझा contact number, मेरा contact number, and आगे number. If I say my contact number is 8898000941. Or if one person will say his or her contact number, my contact number is 9987625526. Okay, while giving the number you have to follow the certain sequence. Look at the way I'm saying my number. Look at the way I'm telling my number. My contact number is 9987625526. Or my contact number is 8898000941. Look at the way I'm saying the number. मैं किस तरीके से मेरे नंबर को बोल रहा हूँ आप ध्यान देना. मी कशा प्रकारे माझा नंबर बोलतोय त्या पद्धतीने तुम्ही फॉलो करा. राइट, यू नीड टू फॉलो व्हाट आई से हियर. मी जे बोलते थे तुम्हाला फॉलो करावा लागेल. मैं जो बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा. नो डाउट अबाउट दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पर्सन 2. सो पर्सन 2 का ये हो गया. माय फ्यूचर प्लानिंग इज मे बी बिकम अ गुड फ्रेंड. पर्सन बोलता है ओ श्योर. पर्सन ने सवाल पूछा, मैं आई नीड योर कांटेक्ट नंबर प्लीज. देन पर्सन 2 अभी सवाल पूछेगा, could you please give me your contact number?
could you please give me your contact number? क्या आप कृपया करके आपका मुझे कॉन्टॅक्ट नंबर दे सकते हो का? कृपया करून मला तुम्ही तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर देऊ शकता? Could you please give me your contact number? Now answer from person 1, my dear friend. त्यानंतर पर्सन 1 चा आन्सर असेल. पर्सन 1 का सवाल रहेगा, आई मीन आंसर रहेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, my contact number is alright. अभी पर्सन 1 क्या बोलेगा? It's pleasure talking to you. आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी हुई. फिर पर्सन 2 बोलेगा, प्लेजर मतलब खुश होना. मला तुझ्याशी बोलून खूप बरं वाटलं. मुझे आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा. पर्सन 2 बोलेगा, ग्लैड टू मीट यू. एंड में आप लोग लिख सकते हो, एंडिंगला तुम्ही लिहू शकता. सी यू अगेन, बाय बाय, टाटा, असं. इस तरीके से उसका एंडिंग होना चाहिए. ह्या पद्धतीने त्याची क्लोजिंग असली पाहिजे. राइट. दिस इज कॉल्ड ॲज स्टँडर्ड इंट्रोडक्शन. ह्याला आपण बोलतो स्टँडर्ड इंट्रोडक्शन. This is a standard way of person 1 person to introduction. Okay guys, हा एक स्टँडर्ड पद्धत आहे जो मी दिलेला आहे तुम्हाला. ये स्टैंडर्ड तरीका है पर्सन 1 पर्सन टू इंट्रोडक्शन का. ओके, इससे स्टँडर्ड तरीका किधर भी नहीं हो सकता है. ह्याच्यापेक्षा स्टँडर्ड मेथड कुठेच असू शकत नाही. मैं भी पूरा फ्लो आपको बोल के दिखा रहा हूँ. मी तुम्हाला पूर्ण फ्लो व्यवस्थित बोलून दाखवतो. प्लीज लिसन इट केअरफुली एव्हरीवन. सर्वांनी केअरफुली किंवा लक्ष देऊन व्यवस्थित ऐका. सब लोग ध्यान से केअरफुली सुनिए. ओके, very important session, how to do an introduction between two people. दो नवीन व्यक्तीमध्ये इंट्रोडक्शन कसं केलं पाहिजे, दो नए लोगों के बीच में इंट्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए, और कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू न्यू पीपल. जब दो नए लोग मिलते हैं किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करते हैं, जेव्हा दोन नवीन लोक एकमेकाशी इंटरॅक्शन करतात कशा प्रकारे इंट्रोडक्शन बोलू शकतात. मेरे डायलॉग्स पे अच्छे से ध्यान देना, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ. माझ्या डायलॉगवर व्यवस्थित लक्ष द्या. मैं कहाँ पे फुल स्टॉप ले रहा हूँ, कहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, मी कुठे फुल स्टॉप घेतोय, मी कुठे पॉज घेतोय. Wherever I'm taking full stop and pause, I want you guys should focus on it. मैं चाहता हूँ आप लोग उस पर अच्छे से फोकस करो, ध्यान दो. ओके, फ्लो इज मस्ट इम्पॉर्टेंट. फ्लो खूप इम्पॉर्टंट आहे. डायलॉग्स आर सुपर इजी. डायलॉग बहुत इजी है, बट फ्लो याद रखना एक आप लोग के लिए चॅलेंज आहे. फ्लोला लक्षात ठेवणं तुमच्यासाठी एक चॅलेंज आहे. डायलॉग खूप सोपे आहे, डायलॉग बहुत ही आसान है. Your job, your target is to keep the flow in your mind. Right. So let's start. This is called as person one person. Hi, good morning, good afternoon, good evening. This is Vijay. May I know your name, please? That's from person. Hi, this is Ajay. How are you? I'm fine. May I know that? How are you? That person answer from person two. I'm also fine. Thank you for asking. Next question from person two. May I know that where do you live? Answer from person one. I live in Thane at Dhokali. Then question from person one. May I know that where do you live? Answer from person two. Oh, what a coincidence. I also live in Thane, but in different area. Coincidence क्यों बोला? Coincidence काय बोलो? Because दोनों ठाणे में रहते हैं, दोघं ठाण्यामध्ये राहतात, but area अलग है. Right? So answer from person two. Oh, what a coincidence. I also live in Thane, but in different area. Okay. The next question from person two. May I know that what are you doing now? As for person one, it depends. Like I'm working as a
analyst in one of the multinational company into IT sector. Next person can say that I'm into college, I'm applying for so and so. Then ask the next question from person one. May I know that what are you doing now? Or may I know that what do you do now? Something like that. Okay. Then the next question, अगर सामने वाले से इंट्रोडक्शन बढ़ाना है, पहचान बढ़ानी है, जर समोरच्या बरोबर तुम्हाला इंट्रोडक्शन वाढवायचं आहे, ओळख जास्त करून घ्यायची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज May I know your family background and hobbies, please? Answer from me. In my family, apart from my parents, I have one younger brother and younger sister. My hobby is teaching, right? Teaching is my passion. Then my question to the front person, that is person one, may I know your family background and hobbies, please? Then answer to person one, my hobby is so and so. In my family, apart from my parents, I have one brother, sister, whatever. Depend. आगे अगर इंट्रोडक्शन बढ़ाना है, पुढे जर इंट्रोडक्शन वाढवायचं असेल, then the next question from person 2. May I know your future planning, please? क्या मैं आपकी फ्यूचर प्लानिंग जान सकता हूँ? क्या मला तुझे फ्यूचर प्लानिंग कळेल का? Answer from person 1. My future planning is जो भी आगे. Okay? सेम काउंटर क्वेश्चन पर्सन 1 से होगा पर्सन 2 के लिए. सेम काउंटर क्वेश्चन असेल पर्सन 1 पर्सन 2 साठी. My, could you please let me know your future planning, please? क्या कृपया करके आप मुझे आपके फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता सकते हो का? कृपया करून तुम्ही मला तुमच्या फ्यूचर प्लानिंग बद्दल सांगू शकता? Then answer from person 2. My future planning is जो भी है मेरी फ्यूचर प्लानिंग. Okay? At the end, after completion of future planning, एंड में फ्यूचर प्लानिंग होने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं, एक अनुमान पे आते हैं कि अभी हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, आता अपन फ्रेंड्स बनू शकतो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, कैन वी बिकम अ गुड फ्रेंड? क्या हम लोग अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं क्या? का अपन चांगले मित्र किंवा मैत्रिणी बनू शकतो? Then answer from person 1 or person 2. Oh, sure, why not? Right? A person 1 is saying that, oh, sure, why not? May I know your contact number, please? Question from person 1. Then answer from person 2. My contact number is 8898000941. Or my contact number is 9987625526. Then question from person 2. फिर question from person 2. Person 2 वाला person 1 को सवाल पूछेगा. Could you please give me your contact number? Then answer from person 1. My contact number is 9892669211. Okay. At the end of the conversation, person will say, it's pleasure talking to you. See you again. Then person 2 may say that, oh, it's really glad to meet you. Bye-bye, take care. So this is a standard way of introduction between two new people. ही एक स्टँडर्ड पद्धत आहे दोन नवीन व्यक्तीमध्ये कशा प्रकारे इंट्रोडक्शन करायचं. ये एक स्टैंडर्ड पद्धत मैंने बताया गाइस. काइंडली फॉलो इट, काइंडली गो थ्रू इट 1000 टाइम, मोर देन 20,000, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन रियल टाइम प्रैक्टिस. ह्याच्यामुळे तुम्हाला रियल टाइम प्रैक्टिस मध्ये खूप खूप मदत होईल. इसकी वजह से आपको रियल टाइम प्रैक्टिस में बहुत ही मदद होगी. दिस विल रियली हेल्प यू इन रियल टाइम प्रैक्टिकल लाइफ. हे तुम्हाला खरंच रियल टाइम प्रैक्टिकल लाइफ मध्ये खूप खूप मदत करेल. ट्रस्ट मी गाइस. मैं किस तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ पे पॉज ले रहा हूँ, कहाँ पे फुल स्टॉप ले रहा हूँ, मी कशा प्रकारे, जसं आपण बोलतो मे आय नो योर नेम प्लीज. एक क्वेश्चन आहे, तो क्वेश्चन लगना चाहिए. हा प्रश्न आहे तर समोरच्या व्यक्तीला तो प्रश्न वाचला पाहिजे. तो जिधर भी क्वेश्चन मार्क आता है, जिधर भी फुल स्टॉप आता है, जहां पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं उसको हम लोग, आपण तिथे पॉज घेतला पाहिजे. वहां पे हमें पॉज लेना चाहिए. May I know your contact number, please? May I know that? Where do you live now? Likewise.
ह्या पद्धतीने तुमचा फ्लो असला पाहिजे. इस तरीके से आप लोग का फ्लो डायलॉग का होना चाहिए. ह्या पद्धतीने तुमच्या डायलॉगचा फ्लो असलाच पाहिजे. इट मस्ट. ओके. मेरे पर्सनल इंटरव्यू के लेक्चर को 1000 बार देखना, 100 बार देखना. माझ्या पर्सनल इंटरव्यूचा जो लेक्चर आहे तुम्ही कमीत कमी 1000 वेळा बघा. तो तुम्हाला इंटरव्यूला येणारच. वो आपको इंटरव्यू में आएगा. मेरा फ्लो देखो, मैंने किस तरीके से बोला है, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन देखो, मेरे लिप मूवमेंट पे ध्यान दो. हाय गुड मॉर्निंग, लुक एट द वे आई से हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड आफ्टरनून, हाय गुड इवनिंग. Someone say, yeah, hi, good morning. Yeah, hi, good afternoon. No, not like that. There should be a modulation in your voice. There should be fluctuation in your voice. आपके वॉइस में वहां पे मॉड्यूलेशन होना चाहिए, फ्लक्चुएशन. हाय गुड मॉर्निंग, hi good afternoon, hi good evening, right? So this is where your pronunciation should be, this is where your tone should be, this is where your fluency should be. इस तरीके से आपके वर्ड की फ्लुएंसी होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, टोन होना चाहिए. Right, I say all right. You cannot say all right. It's not all right, it's all right. Okay, that's fine. Okay, that's fine. So whenever you do the conversation between two people, जेव्हा पण तुम्ही दोन व्यक्तीमध्ये, दोन नवीन लोकांमध्ये कॉन्व्हर्सेशन करता, इंट्रोडक्शन करता, त्यावरती सिरियसली फोकस करा. त्यावरती फ्लुएन्सीवरती लक्ष द्या. त्यावरती वॉइस मॉड्युलेशन वरती लक्ष द्या. वॉइस मॉड्युलेशन पे आप ध्यान दीजिए, फ्लुएंसी पे आप ध्यान दीजिए. आपके जो पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, फुल स्टॉप्स आते हैं, उस पे ध्यान दीजिए. Okay, whenever the question comes while talking, while forming the sentence, you have to focus on it. You have to understand the importance of comma. You have to understand the importance of full stop. You have to understand the importance of each and every punctuation mark on the pause. तुम्हाला प्रत्येक अवतरण चिन्हाचं महत्व कळायला पाहिजे. आपको हर एक अवतरण चिन्ह का महत्व समझ में आना चाहिए. कहाँ पे फुल स्टॉप लेना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स के तरह के एक्सप्रेशंस आने चाहिए. इस तरीके से आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा. 110% फोकस करना पड़ेगा. तब जाके आपको पर्सन 1 पर्सन 2 आएगा. तेव्हाच तुम्हाला पर्सन 1 पर्सन 2 व्यवस्थित बोलता येईल. ओके. वन मोर लास्ट सेशन आय वुड लाईक टू से. आणखी एकदा मी तुमच्यासाठी बोलतोय. If I'm a person 1, hi, good morning, this is Vijay, may I know your name, please? Then person 2, hi, good afternoon or good morning, this is Pradeep, may I know how are you? I will say, I'm fine, may I know how about you? He will say, I'm also fine, thanks for asking. May I know that where do you live? Then I will say, I live in Thane at Dhokali. Then I will ask him the same question. Could you please tell me that where do you live? Then he will say or she will say, I also live in Thane, but in different area. Oh, what a coincidence. Next question, different person will ask, may I know what do you do now? I would say I'm working into IT sector, I'm handling my own English speaking classes. Then मेरा question सामने वाले करेगा, may I know that what do you do now? Then answer from person 2, it depends. Okay, depends. सबका अलग अलग answer होगा. Okay. After that, family background, hobbies, future planning, then can we become a good friend? त्यानंतर आपण विचारायचं, आपण चांगले मित्र मैत्रिणी बनू शकतो का? If the front person is agree, then we have to share our contact number. अगर सामने वाला agree होता है, जर समोरचा व्यक्ती agree होईल, then आपल्याला आपला contact number share करायचा आहे. At the end of the conversation, we have to say, conversation के end में हम लोग को बोलना है, it's pleasure talking to you. सामने वाला I am glad to meet you. See you again. Bye bye. Have a good day. इस तरीके से have a good day. ऐसा बात. इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. ह्या पद्धतीने आपण पर्सन 1 पर्सन 2 चे इंट्रोडक्शन केलं पाहिजे. टुमॉरो आय विल स्टार्ट द वर्बल क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड. उद्याच्या लेक्चरला मी तुम्हाला वर्बल क्वेश्चन चालू करणार आहे. डब्ल्यूएच क्वेश्चन्स आय हॅड ऑलरेडी फिनिश. मी डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म केलेला आहे. उद्या आपण संध्याकाळी 9 ला भेटूया. कल अपन शाम को शार्प 9 o'clock को मिलेंगे. और मे बी इफ I'll start 1 hour early, I will keep you posted. then मी 8 ला किंवा 9 ला मी तो टाइम तुम्हाला सांगेन. ओके, वो टाइम मैं आपको बता दूंगा कि मैं कल का सेशन 8 बजे 9 बजे शुरू करूंगा. बट रिमेंबर गाइस, पर्सन 1 पर्सन 2 के डायलॉग्स कभी भूलना मत.
पर्सन वन पर्सन टूचे डायलॉग कधीच विसरू नका, बिकॉज दॅट विल हेल्प यू फॉर एव्हर. ते तुम्हाला पूर्ण लाइफ टाइम हेल्प करना है. त्याचा उसकी मदद आपको पूरे लाइफ होने वाली है, हर एक कदम कदम पे होने वाली है, हर एक पॉइंट पॉइंट पे आपको मदद होनी है, प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंटला तुम्हाला त्याची मदत होणार आहे. त्यामुळे लाइफ टाइम हे डायलॉग्स तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजेत. लाइफ टाइम, ये कोई एग्जाम पे नहीं करना है या किसी परीक्षा के लिए यूज नहीं करना है, इसको रियल लाइफ टॉकिंग में यूज करना है. ह्याचा वापर तुम्हाला रियल लाइफ टॉकिंग मध्ये करायचा आहे. देअरफॉर इसके लिए एक हंबल रिक्वेस्ट करावा म्हणून एक कळकळीची विनंती करतो, हे डायलॉग जास्तीत जास्त वाचा. Kindly go through these dialogues again and again. Now I'm going to explain whole session in Hindi. This is called as the conversation between two new people. This is called as an introduction between two new people. When two new people interacting with each other, when two new people introduce with each other while joining the new school, while joining in any college, while joining in any office, or maybe in the traveling, when two people meet together, two new people interact with each other, or they wanted to make more and more interaction with each other. At that time, the people can use whatever I have taught today. People can apply my dialogues, people can follow my dialogues, and they can try and clear their best with each other. They can try and share more and more information about themselves, and they can become more interactive with each other. Okay, the flow of dialogues is really important, guys. Dialogues are very easy and cakewalk. However, the flow is super duper important. So it's a humble request for each and every students, kindly focus on the flow. तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने फ्लो पर ध्यान दो. कल मिलेंगे गाइस. I'll keep you posted on my status. I'll keep you posted in my group. Good night, guys. Take care. Have a wonderful day. I'm ending my today's live session. Thank you so much. We'll see you for tomorrow's lecture.